Hello students, as we know that um, we have already discussed about complex differentiation. Now we will discuss about complex integration. As you know that in case of real variables, the path of integration of the integral a to b fx dx is always along the x-axis from x equal to 0 to x equal to b. While in case of complex function fz, the path of the definite integral a to b f z dz can be along any curve from z equal to a to z equal to b. So this is the basic difference um, in the two integrals, the real integral and the complex integral. Now what do we mean by line integral of fz? The line integral of a function, complex valued function fz, along any curve c is given by line integral over c fz dz, and it is written as this way. Here function fz is a continuous function of z which is defined at all points of the closed curve c. The curve may be closed or may not be closed, and it is written as in this way. So as you know that in real analysis, when we integrate a function y is equal to fx, suppose this is a function, these are the limits x equal to a to x equal to b, we integrate the given function y is equal to fx between these limits. So actually we try to find now these limits are, you can see that x equal to a to x equal to b, this is on x-axis, and by the integration a to b fx dx, we actually find this area which is covered between these four, the curve itself and these three lines. That was the definite integral of a function in between the limits a to b in real analysis. But when we talk about complex, so here in complex, when we say suppose this is a point and this is another point p1 and q, suppose this is a point p and this is a point q, and this is a curve c, suppose this is a curve c, and so the function, suppose our function fz, it is continuous at each point of this curve c from point p to q. So along this curve c we can integrate the function fz from between point from p to q. We can integrate this function fz, so we write it as along the curve c, either we can write it as along the curve c integration of fz with respect to z. So it was mandatory that the function must be continuous at each point of this curve c. That is what we have written here. Here the function fz is a continuous function of z defined at all points of c, and it is written as this. If the starting and ending point of the curve, suppose if the starting and ending point of the curve suppose are same or coincide, then in that case we say that this curve is a closed contour, and we represent it by the symbol in this way: the line integral over closed contour over closed curve c fz dz. Now here curve c is a closed curve, so this, it is representing the symbol for closed curve. Okay, so this has been written here. If the initial and final points of the curve coincide the c coincide, then c is a closed curve. Coincide, then c is a closed curve. Then integral is called
or in this situation we say the integral is contour integral or closed curve, and is denoted by this way. Okay, so line integral over closed curve C fz dz, it is read as this way. Now if fz is equal to ux plus iv, suppose complex valued function is being written in this way, then as we know that z is equal to x plus iy, so we know that dz is equal to dx plus I dy. So line integral over curve, line integral of fz dz over closed curve C is equal to, we have substituted the value of fz in terms of u plus iv, u and iv, and the value of dz in terms of dx plus I dy. After multiplying and equating the real and imaginary parts, separating them, so we have line integral of u dx minus v dy plus I into line integral of v dx plus u dy. So you can see that the integration of a complex valued function is actually, we can have its value by evaluating two line integrals of real variables of real functions. U and v are functions of real variable x and y. So it is equivalent, the integration of this function is equivalent to the integration of line integral of these two line integrals. Okay, the same thing is being written here, which shows that the evaluation of the line integral of a complex function can be reduced to the evaluation of two line integrals of real functions. U and v are real functions, and they are functions of real variables x and y. Now we are having few properties of integrals. If fz and gz, suppose two functions of z, are integrable along a closed curve C, along any curve C, then the line integral along the curve C, fz plus minus gz dz is equal to their separate, the integrals, the summation, their summation and subtraction of the separate integrals of fz and gz along the curve C. Similarly, if a is any constant, then the integration of a fz dz along closed curve C, along curve C, is equal to a times of integral of fz dz. Okay, and if suppose there is a point M in between A to B, the curve C, suppose here this is point A and this point is B, and I take a point M here, so the integral along from A to B, from this point to this point, can be breaked between A to M, integration of fz between from point A to M, plus integration of fz from point M to B. That will be, so A to mf, integration of fz from A to M, and integration plus integration of fz from M to B. That will be the result. The result will be the same, where A, B, M are on the curve C. And the last property is A to B fz. If we interchange the limits of the function fz, then it will similarly there will be a negative sign. We have to place a negative sign if we are interchanging the limits of the function fz. Now moving towards an example. Evaluate 0 to 1 plus I x square minus iy dz along the paths y is equal to x and y is equal to x square. Now this is a function which we need to evaluate the integration of this function, complex valued function. We need to integrate it along two different paths, and we will find its value. So first of all, let us see its figure. Its figure is of this type. You can see it. This is point 0 comma 0. This is point P, that is equal to 1 comma 1. Actually 1 comma 1, from where we have got it from this definition, 1 plus I, z is equal to 1 plus I, to x is 1 and y is also 1. So we have attained the point 1 comma 1, and the starting point of the integral is 0 comma 0. So we are moving from point
0 comma 0 to the point 1 comma 1. Okay, so we are having actually two paths. We need to integrate the given function along two different paths. First path is being given as y is equal to x, y is equal to mx. As you can see that y is equal to x is a straight line um, passing through the origin, and the second path is the y is equal to x square, or x square is equal to 4ay, the parabola, upward parabola. Clear? So moving towards back the question, towards the question. Now suppose solving for path 1, y is equal to x, along path y is equal to x, straight line. So along the line y is equal to x, we have now dy is equal to dx, obviously differentiation of y, that is dy is equal to dx. The elementary change in y will be equal to elementary change in x. The same, the change in y will produce the similar change in x. So we have dz is equal to dx plus I dy. Replace the value of dy as dx. So we are having here I dy, that dy will be replaced by dx. So dz is equal to 1 plus I, take dx common, 1 plus I dx. So the value of the integral, this integral, can be written as in this way. As I said, since the variable y is being transformed in form of x, so now we will just consider the limits of x, since y is being replaced with x by x. So we will just consider the limits in the integral of x, and you can see that in this point at origin x is 0, and at the point extreme point x, value of x is 1. From figure it is also clear that here you can see that x is 0 and here x is 1, y is also 1, but if we are talking about x, so x is 0 and x is 1. So these are the limits. Put down the limits 0 to 1. Now you need to replace the value of y as x. So here y will be replaced by x, and dz will be replaced by the value 1 plus I dx. Okay, 1 plus I dx, and limits of x are taken as 0 to 1. Now solve it. So we will have it in this way. After the integration we will have the result as this, and put down the limits and simplify it, you will have the first result. Similarly, when we talk about the second curve along the parabola y is equal to x square, now we are replacing y by x square. In the given integral we will replace y by x square, and the dy will be equal to, differentiate both sides, dy will be equal to 2x dx. So change in y is equal to 2 times of x of dx. Okay, so dz, what we will be having from dz is equal to dx plus I dy. Replace dy by 2x dx. Now take common dx common, we will be having 1 plus 2ix. Now since again the limit is being transformed, variable y is being replaced by x, so we will take again the limit of x 0 to 1. So the given integral again can be written as in this way, where y is being replaced by x square, and dz is being replaced by 1 plus 2ix dx. Okay, so 0 to 1 this is. Now simplify it, and after its integration we will be having the result. Integrate it, substitute its limits and solve it, you will be having this result. After producting these two terms, replace I square by minus 1 and sum up the result, then you will be having 5 by 6 plus 1 by 6i. Okay, so you can see that along the two different paths we are having the two different values of the same function, the two different values of the line integral of the same function fz along two different paths. This value is 5 by 6 plus 1 by 6i, and the previous one we have attained 5 by 6 minus I by 6. Both are different values. So what it indicates, actually it indicates that if a function, for a complex valued function, if it is not an analytic function, since we are not talking about analytic function in these examples,
So if a function is not an analytic function, then if we integrate the function along between 2 points, along any curve, along different curves, we will be having different values of the integral. But if, point to be noted is, if the function f(z) is analytic in the given region or the domain, then if we integrate the function between 2 points along any path, then we will be having the same value of the integral. Here, if the function fz would have, if the function was maybe, if it is an analytic function, then we will be having here the same results, 5/6 plus I/6, and here it also 5/6 plus I/6, but the result would have been same. But since the function is not analytic, hence along two different paths we are having two different integral integrals values of the same function, value of the same function, but the value of the integral is different along the different path. So that is the basic difference when we are talking about analytic function or simply any complex valued function. Now similarly, one more example is here I have taken. Suppose this is the function mod z bar square, and we need to evaluate it along the line integral from between the point 0 to z equal to 0 to z equal to 2 plus I. So you can see first of all its curve. We need to integrate this, find this line integral along the real axis from z equal to 0 to z equal to 2. First of all, we are having two parts in this. For this integral we are having two parts, and first one is we need to integrate it along real axis z equal to 0 to z equal to 2, and then along a line parallel to y axis from z equal to 2 to z equal to 2 plus I. So this is one path, and the second path is 2y is equal to x or y is equal to mx, again the radius vector passing through origin. तो हमें यहाँ पे फिर से दो डिफरेंट पाथ्स के अलॉन्ग इसको दिखाना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी. जरा इसका फिगर देख लेते हैं हम लोग. देखिए इसका फिगर कुछ ऐसा आएगा, देख लीजिए 0,0. तो एक तो पाथ है 2y बराबर x, दैट इज अगेन अ रेडियस वेक्टर y इक्वल टू mx पासिंग थ्रू ओरिजिन. ये मान लेता हूँ पॉइंट है P. पॉइंट आपको दिया है क्वेश्चन में 2y प्लस 2 प्लस आई, ये दिया गया 2 प्लस आई. 2 प्लस आई रियल पार्ट, x की वैल्यू 2 है और i का कंपोनेंट 1 है, y की वैल्यू 1 है, यानी पॉइंट हुआ 2,1, और ये 0 है तो मतलब 0,0. तो ये आपको दिया गया था. तो 0,0 से 2,1 यहाँ तक पहुँचना है आपको. एक रास्ता ये है जो आपसे कह रहा है, एक कर्व ये है. दूसरा कर्व कह रहा है जो पहले पार्ट में कह रहा है, वो कह रहा है पॉइंट O से A तक आएंगे, तो 0,0 से z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 2 तक. तो 2 का मतलब 2,0, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इसका मतलब y की वैल्यू 0, x तो है, रियल पार्ट 2 है, z इक्वल टू 2 में रियल पार्ट 2 है, तो 2,0. और फिर इस पॉइंट से आपसे कह रहा है अल्टीमेटली आपको यहाँ तक आना है 2 प्लस आई तक, यानी कि 2,1 तक. तो एक तो ये रास्ता है जिसके अलॉन्ग आपको इंटीग्रेट करना है, दूसरा ये रास्ता है जिसके अलॉन्ग आपको फंक्शन को इंटीग्रेट करना है. चलिए देख लेते हैं 1 बाई 1 दोनों को. तो ये तो था. तो सबसे पहले तो मॉड जेड स्क्वायर जेड बार स्क्वायर है उसको सॉल्व कर लिया. तो x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर सिंप्लीफाई करिए, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दीजिएगा, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा. रियल ये आ जाएगा, रियल पार्ट, और इमेजिनरी ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y एक्स वाई. ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं हम लोग. अब पहले पाथ के अलॉन्ग बात करते हैं. अलॉन्ग द पाथ OAP, देख सकते हैं आप, अलॉन्ग द पाथ OAP. तो आपको ये दिख रहा है, O से A आएंगे, A से P जाएंगे. तो अब यहाँ पे दो डिफरेंट पाथ है, O से A भी आना है, फिर A से P. तो एक साथ दोनों पाथ को नहीं ले सकते, एक एक करके लेंगे. पहले O से A आएंगे, फिर A से P आएंगे. तो हमने क्या किया, हमने पहले तो वैल्यू लिखी फंक्शन की. 0 से कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना था, 0 से 2 प्लस आई जेड बार स्क्वायर डी जेड. तो इसको हम पहले करेंगे O से A के अलॉन्ग. तो अलॉन्ग पाथ O से A, और इसको हमने एक्स वाई के फॉर्म में लिख लिया है. तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y एक्स वाई, जो पीछे हमने सिंप्लीफाई किया था डी जेड. और दूसरा पाथ क्या है, A से P तक, A से P जाना है. तो A से P सेम फंक्शन, जेड बार का स्क्वायर पीछे सिंप्लीफाई कर चुके हैं हम लोग, वही रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y एक्स वाई डी जेड. ओके, तो
अब सबसे पहले अब ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, क्योंकि हमको इसको अलग सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इस केस में अलग करना पड़ेगा। दोनों की वैल्यू उठा के जब यहाँ रखेंगे तब हमें इसकी वैल्यू मिलेगी इस पाथ के अलॉन्ग इंटीग्रल की। यानी इस पाथ के लिए अलग सॉल्व करना है, इस पाथ के लिए अलग अलग करना पड़ेगा, एक साथ दोनों नहीं होगा। तो आपने देखिए पहले क्या है, लॉन्ग अलॉन्ग ओ ए, ओ से ए के अलॉन्ग। अब देखिए जब ओ से ए चलेंगे तो कौन सी चीज़ नहीं बदल रही है। अब देखिए वाई की वैल्यू 0 है, यहाँ भी वाई की वैल्यू 0 है, यानी वाई कॉन्स्टेंट है। बदल क्या रहा है, एक्स की वैल्यू यहाँ 0 थी, यहाँ क्या हो गई 2 हो गई, तो एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो चलिए, तो y की वैल्यू 0 हमने लिखा, y 0 है, तो dz क्या हो जाएगा, dz होता है आपका dx प्लस आई डी वाई, y 0 तो dy भी 0 होगा, तो dy 0 रख देंगे तो क्या बचा, dz को आप रिप्लेस करेंगे dx से। और x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखिए x 0 से 2 तक जाएगा, तो x की लिमिट आ गई 0 से 2 तक। तो देखिए ये फंक्शन तो हमने फिर से रखा, यही ओ ए वाली पहला इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये ओ ए की वैल्यू आ गई, x की लिमिट 0 से 2, और एक्स स्क्वायर चूँकि वाई 0 रखना है, देखिए तो वाई को 0 यहाँ रखिए और वाई को 0 यहाँ खत्म हो गया, ये भी खत्म ये भी खत्म, जैसे ही वाई को 0 रखा। और dz को क्या रखना है, dx रख दीजिए, इंटीग्रेट करिए एक्स स्क्वायर का x³ लिमिट रखिए 0 से 2, 8/3 आंसर आ गया। ठीक है, फिर इसी तरह से अलॉन्ग ए पी, अब जा रहे हैं पॉइंट ए से पी, पहले ओ से ए आए थे, अब ए से पी जा रहे हैं। तो ए से पी के दौरान देखिए कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, x की वैल्यू 2 है, यहाँ भी x 2 है, तो x आपका कांस्टेंट हो गया। तो अगर x की वैल्यू 2 है तो dx क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है ना, तो डिफ्रेंशिएट करिए, dx की वैल्यू 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। y चेंज हो रहा है, y की लिमिट क्या आ रही है, देखिए यहाँ पे y 0 और y यहाँ पे क्या है 1, तो y चेंज हो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं, तो x 2 था, dx 0 हो गया, तो dz क्या हो जाएगा, dx प्लस आई डी वाई, दैट विल बी इक्वल टू dz प्लस आई डी वाई। तो चूँकि dx 0 हो जाएगा ना, dx 0 है, रख दीजिए 0, तो dz को रखेंगे, रिप्लेस करेंगे आई डी वाई से। y की वैल्यू वेरी कर रही है 0 से 1, तो ये आपका इंटीग्रल आ गया। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे लिखेंगे आप, 0 से 1 रखिए वैल्यू, x की जगह 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वाई तो चेंज हो रहा है, वाई को छोड़ दीजिए, -2y, एक्स की फिर जगह रखिए 2, तो 2 2 4 हो जाएगा, 4i/y, और dz को रिप्लेस करना है आई डी वाई से, तो आई डी वाई रख दिया। ठीक है, तो अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 4, ये i को अंदर पास कर दिया है तो 4i, और फिर इंटीग्रेट कर दिया है, i से मल्टीप्लाई कर दिया है, और इसको y के लिए इंटीग्रेट करना है तो y के लिए लगाते चले गए, 4i/y, 4y आएगा, i से मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई स्क्वायर का y³ हो गया, y का y²/2 हो गया, i सब पे लग गया, i² -1 देगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचा, 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 बचा, और प्लस में देखिए ये आ गया, लिमिट रख दीजिए 0 से 1, तो देखिए ये आ गया 4i - i/3 + 2, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 2 + 11/3i, 2 + 11/3i, दिस इज़ 11/3। तो दिस इज़ द सिंप्लीफाइफिकेशन। अब ये आपने दोनों पाथ के अलॉन्ग निकाल लिया है, आपने इसके अलॉन्ग भी इंटीग्रल की वैल्यू निकाली ओ ए, और ए पी के अलॉन्ग भी निकाली, दोनों को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दिए, इसी इक्वेशन 1 में रख दिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए हमने इन दोनों की वैल्यू रख दी, तो दोनों की वैल्यू रख दी इक्वेशन नंबर 1 में, तो जो हमें फंक्शन की जिस फंक्शन की वैल्यू निकालनी थी इंटीग्रल की वो आ गई, दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया, दैट इज़ द फाइनल रिजल्ट। अच्छा, हमें एक चीज़ और देखना था कि इसी फंक्शन को अगर ओ से लेके पी स्ट्रेट लाइन y = x के अलॉन्ग इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, तो देख लीजिए, तो अलॉन्ग द लाइन ओ पी क्या है, 2y = x है, या रिवर्स भी बोल सकते हैं आप, x = 2y, मतलब आप चाहें तो 2y की जगह x रख सकते हैं या y की जगह x/2, तो dy की वैल्यू आएगी dx/2, ऐसे भी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, या हम उल्टा भी कर सकते हैं, यानी x = 2y मान लेते हैं तो dx = 2dy, तो हम dx की जगह 2dy रख देंगे, x की जगह 2y रख देंगे, और चूँकि हमने x को y में कन्वर्ट कर दिया तो हम y की लिमिट्स ले लेंगे, y की लिमिट आपको पता ही है 0 से 1 जा रही हैं, देख सकते हैं y की लिमिट, y और x दोनों ही, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे x की लिमिट 2 है, 0 से 2, अगर x के लिए अगर y को x में बदलते हैं तो x की लिमिट 0 से 2 चलेगी, और अगर आप x को y में बदलते हैं तो y की लिमिट आपको लेनी तो 0, और यहाँ पर y 1, 0 to 1, तो हमने x को y में बदल दिया है, तो y की लिमिट क्या हो गई 0 to 1। अच्छा देखिए dz की वैल्यू क्या है, dz dx प्लस आई डी वाई, इसमें रख दीजिए, तो dy की वैल्यू dx की वैल्यू है 2dy, रख दीजिए, dx की जगह 2dy प्लस आई डी वाई, तो dy कॉमन, और x की जगह रखना है आपको 2y, तो अब देखिए ये फंक्शन था आपका, ठीक है, इसमें रख देंगे वैल्यू हम, तो ये 0 से 2 + i, और z² तो पहले फंक्शन रखा dy dz, अब इसमें वैल्यू रखिए, dz रखिए 2 + i
टू प्लस आई डी वाई डी जेड की वैल्यू रखी, और जहाँ पर भी x है x की जगह 2y रख दीजिए, एक्स स्क्वायर 4y² बन जाएगा 2y का स्क्वायर, और यहाँ पे भी x की जगह 2y रखा। सिंप्लीफाई करिए, ये देखिए आ गया 2 प्लस आई था, ये डी जेड की जगह रखा 2 प्लस आई डी वाई, यहाँ से ये बाहर चला गया 2 प्लस आई डी वाई बचा, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो 4y² में से y² गया, कितना बचा 3y² बचा, और 4i(y²). अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो देखिए 2 प्लस आई, इसमें देखिएगा y² कॉमन होगा तो अंदर बचेगा 3 माइनस 4i, 3 माइनस 4i कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दिया, y² कॉमन हो गया तो अंदर y² बचा, y² का इंटीग्रेशन क्या होता है y³/3, ठीक है। इन दोनों को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या बचेगा 10 माइनस 5i इंटू y³/3, लिमिट रख दीजिए 1/3, तो ये फाइनल आंसर जो आ गया आपका 10/3 माइनस 5/3। अब देखिए दोनों आंसर अलग अलग इसमें भी आ रहे हैं। इस y बराबर जो हमारा पाथ है 2y बराबर x, इसके अलॉन्ग लिमिट ये आई है, और इससे पहले जो हमने सॉल्व किया था तब लिमिट क्या आ रही थी 14/3 प्लस 11/3 आई। तो दिस इज़ हाउ आप देख सकते हैं कि अगर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा तो लिमिट हमेशा डिफरेंट पाथ के अलॉन्ग डिफरेंट आती है। अगर इसी केस में अब आगे हम देखेंगे, अगर कोई फंक्शन हमारा एनालिटिक होगा तो हम चाहे किसी भी पाथ के अलॉन्ग हम इंटीग्रेट करें फंक्शन को, हमारी लिमिट जो आएगी वो, या इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, ठीक है। सो दिस वाज एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। आज के लिए थैंक यू।